So 2.5 minutes before we go live, कैसे हैं आप लोग सब? And so my co-host is not here today, which means more responsibility on my shoulders. तो क्योंकि रमजान का भी महीना चल रहा है, so I thought, why not talk about forgiveness? Because forgiveness is very important in life, and I feel कि बहुत मुश्किल होता है लोगों को माफ करना. So I feel that forgiveness is just very important in life. So we're going to talk about forgiveness. Bear with me just a few minutes. And for the month of Ramadan, they are open all 7 days. On weekdays from 4 p.m. to 12 a.m. and on weekends 4 p.m. to 1 a.m. Haji Ali is all about serving you fresh for Ramadan. Times have been very stressful this past few years. Hi, I'm Usha. so I needed to make sure that we have everything in place. About yourself and your loved ones for answers about your career, money, health, relationships, future, and love. Hey, Kalpana. I can give you advice. Hey, Kalpana, I'm good. Hold on. Okay, so I need to take you live on air. So hold on, Kalpana. I'll bring you on in a minute. So thank you, Jalaluddin. How are you? Thank you for being here. Nasir, kaise hain aap? So thank you all for being here. And so we are live on. I have 38 seconds before starting the show, and we are live on YouTube, Facebook, and LinkedIn. So हम multiple जगहों के ऊपर इस वक्त we are streaming live. So, hello everyone. How is everyone doing? So, yeah, this is Saima Dillon signing in and starting heart to heart with Saima and Kalpana. Kalpana जो है वो आज स्टूडियो में नहीं है. She's not feeling too good, so she's joining in over the phone. Kalpana, can you hear? Okay, so I will bring Kalpana on in just a second. But meantime, let me go ahead and we talk about different things on Heart to Heart. And today I thought because we are in the month of Ramadan, so why not talk about something which is very crucial for all of us, and that is forgiveness. Forgiveness is something, I think most people have a difficult time forgiving. And I thought it's something very important that we should all focus on, because सबको दूसरों को माफ करने में बहुत मुश्किल होता है. So let's play our first song for today, and I will work on bringing Kalpana on here. So here we go. All is well. Kalpana, could you not hear? I brought you on. I couldn't hear you. Now I can, because I have you on the phone, but I couldn't hear you. So okay, so let me try again, Kalpana. Let me bring you back on. Hold on. So just wait for the song to be over, and then I'll okay, hold on.
Okay, okay. All right, let's try again. ओके सो जब मैं अकेली होती हूँ स्टूडियो में तो मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है to make sure that everything is functional. So thank you all for being here. कैसे हैं आप लोग सब? Akil, thank you for being here. Manu, बहुत बहुत शुक्रिया आपने join किया. Hey Noreen, how are you doing? Honey, कैसे हो आप? तो हम लोग आज I felt कि it's good for us to talk about forgiveness. किसी को माफ करना, forgiving others, is very difficult, is something very difficult to do because कभी ये होता है कि हम फील कर रहे होते हैं कि हम वी आर इन द राइट, क्यों माफ करें, या किसी दूसरे ने हमारे साथ इतना गलत किया है, हम क्यों माफ करें. कभी वी आर जस्ट सराउंडेड बाय इतनी वी आर सराउंडेड बाय बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हम होते हैं, और जब वो एक और कोई किसी से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं फॉर देम टू बी देयर फॉर अस, और फिर वो नहीं होते वहाँ पर उस मुश्किल वक्त में, um, तो दिल भी टूटता है. बट यू फॉरगिव नॉट बिकॉज द सिचुएशन रिक्वायर्स फॉरगिवनेस, मगर आप फॉरगिव करते हैं बिकॉज इट्स यू नीड द क्लोजर. आप फॉरगिव करते हैं कि आप जब तक किसी को माफ़ नहीं करेंगे उस वक्त तक यू कैन नॉट मूव ऑन इन लाइफ. तो अगर आप में से कोई भी हमें मुझे इधर ज्वाइन करना चाहे तो प्लीज़ send me a message, send a request, आप भेज सकते हैं. And next break के ऊपर I can bring you on. So we're gonna go proceed with the show. So that right there was all is well, and I hope all is well with everyone. Whoever is watching, I hope सबके लिए बहुत अच्छा हो रहा हो, सबका दिन बहुत अच्छा हो. Hey Kalpana, are you able to hear me? Yes, yes. So you are on air, Kalpana, and I hope you're doing a whole lot better. We miss you in the studio because सारी multitasking मुझे अकेली करनी पड़ रही है, तो I'm really missing you. बिल्कुल. Absolutely, Kalpana. I feel कि forgiveness, I mean, बहुत कुछ जिंदगी में जब हम करते हैं ना, तो हमारी expectations होती हैं.
हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम आवर क्लोज फ्रेंड्स, और हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम द पीपल वी लव, वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। एंड जब हम अपने वर्स्ट के ऊपर होते हैं, या हमें वर्स्ट भी नहीं भी हों, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन इन रिश्तों से होती है, और जब हम किसी मुश्किल वक्त के अंदर होते हैं एंड समथिंग डिफिकल्ट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दोज पीपल जिनमें हमें इतना मान है, जिनमें जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, we hope for them to be there, and when they are not and your heart is broken, and then you hold on to that grudge and you hold on to those feelings. But I think life may forgiveness jo hai, it is said that sincere forgiveness is not colored with expectations that the other person apologizes or changes. Don't worry whether or not they finally understand you. Instead, love them and release them. Life feeds back truth to people in its own way and time. तो जब जिंदगी में आप फॉरगिवनेस कर देते हैं ना, कल्पना, आई फील कि आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। फॉरगिवनेस जैसे जो इमोशंस हैं, जो कि हमारे अंदर पाए जाते हैं, ये जो इमोशंस हैं ना, दीज इमोशंस दे हिंडर अस। ये हमारी खुद की ग्रोथ, हमारे खुद का जो बॉडी का एक फ्लो है, उसको हिंडर करते हैं। कल्पना, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीज है जो रुकावट बनती है? What is it that stops us from forgiving someone? What is that hurt that we feel? Is it connected to our ego? I mean, I would love for callers to call and for them to share with us what they feel कि हम forgive क्यों नहीं कर पाते हैं, वो क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है, वो क्या ईगो है, वो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो क्या चीज़ है, वो
वो जो एक्सपेक्टेशंस जब टूटती हैं, जब आप किसी से किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समवन एंड इट डजंट कम थ्रू एंड योर हार्ट इज ब्रोकन, why does that happen? Why is it so difficult to forgive? We would love to hear from people. 214-817-3333 is the number to the studio. You're listening to Heart with Saima and Kalpana. And हम आप हमें स्टूडियो में लाइव भी वॉच कर सकते हैं. I am streaming live on Facebook, YouTube, LinkedIn. We are streaming live in multiple places. You can actually see us. You can actually come on the screen with me on Facebook. हम आपको बुला सकते हैं, आपके ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं on Facebook. And so we would love to hear from you. So with that, we're going to go into our next song and hope you enjoy it. This, so hold on. So, how's everyone? Um, Back and forth. So, I have multiple things here. जो जो चारों तरफ हैं, and we are streaming live. So, क्यों? Um, First of all, Sunita, thank you for being here. Shireen, बहुत बहुत शुक्रिया. Munir, thank you for being here. Thank you everyone for joining in, for being here. तो आपका क्या ख्याल है? And अगर आप मेरे साथ ये screen share करना चाहते हैं, and you want to come right here and be with me and share your thoughts, just आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और मैं आपको अपनी स्क्रीन पे आपको ले सकती हूँ एनी टाइम यू वांट. सो आपका क्या ख्याल है? क्यों हमें इतनी मुश्किल होती है फॉरगिवनेस में? माफ़ करना इतना मुश्किल क्यों होता है? आपका क्या ख्याल है? एंड यू नो आई फील कि माफ़ करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू फॉरगिव. पर जब आप एक दफ़ा उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, एंड जब आप यू लर्न टू फॉरगिव, then that forgiveness is very empowering. Well, that forgiveness, it releases you from this bond. You know how a spider is, or spider ka web ke andar jab aap jakad jate hain, I feel कि when you forgive, you're able to release yourself from that bondage. So I think forgiveness is extremely powerful. So in this month, which is a month of kindness and forgiveness, it's a month of you know um, trying to fight जो हमारे अंदर एक शैतान है, overcome all our own vices. I feel कि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. They reset us in our life wherever we are. Those things, they reset us. So with that, I'm going to just prepare to go back on.
So welcome back. That was "Koi Ladka Hai" song from "Dil To Pagal Hai." Some of these movies are iconic movies, and they stay with you forever. So welcome back, आप सुन रहे हैं Radio Caravan. This is Heart to Heart, and this is Saima, and I believe in touching lives wherever I go. And with me, I have my wonderful co-host. Absolutely. And, with that, your money doesn't come easy. That's why you work hard, save, budget, and protect it. Discount Power has you in mind by providing affordable electricity to fit your lifestyle. Just because it's essential doesn't mean you have to pay more. At Discount Power, they care. So enjoy the finer things in life and save on your electricity bill. Visit discountpowertexas.com/caravan. तो हम लोग बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस की। तो कल्पना, वी वर डिस्कसिंग कि इतना मुश्किल क्यों होता है, व्हाट इज इट दैट होल्ड्स अस बैक? एब्सोल्युटली कल्पना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। um, तो let's do this, let's go on and do our next song, which is Hail to Nail. Contracting serves our community. If your roof, rain gutters, siding, and fence is affected with nails and windstorms and has sizable hail impacts or are missing shingles on your residential or commercial roof, please call Nisar Ahmed of Hail to Nail Contracting at 682-561-9795 for free inspection, claim assistance, and estimate. They also install wood flooring, pergola, patio cover, and replace kitchen range hood. And with that, we're going to go into our next song, and hope you enjoy this. Here goes. So I had to go on that break real fast because I'm emergency.
सो एनीवे सब कुछ चल रहा होता है, इमरजेंसीज भी चल रही होती हैं. Radio Caravan, this is Saima. Gee, I absolutely was. Can I put you on just a brief hold? Give me just a second. Do you want to come on air, or do you want to just share your opinion off air? Okay. Okay. So hold on just a second. All right. So you're on air. Who am I speaking to? Ramesh. Good afternoon. How are you doing? तो बताइए रमेश, आई वाज आस्किंग कि फॉरगिवनेस माफ करना किसी को इतना मुश्किल क्यों होता है? डज इट हैव टू डू विद आवर ईगो, या डज इट हैव टू डू विद आवर एक्सपेक्टेशंस कनेक्टेड टू द ईगो? Kalpana, you're back on air. I actually had a caller, and he was Ramesh. If you can please give us a call back. Kalpana, when he calls back, I'll just put you on hold and take the caller live on air. But otherwise, he was calling to share his feedback. So, Kalpana, hold on just a second. Okay, so sorry about that, Ramesh. I dropped your call by mistake. Please बताइए. एंड सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट 15 seconds में हम वी आर गोइंग टू गो इनटू ब्रेक. तो वुड यू लाइक टू होल्ड और मे बी कॉल बैक इन 5 minutes, or you would you like to just talk to me? Okay, so we can just talk off air. So give me just a second. As you can see, यहाँ पे काफी सारी multitasking चल रही है. All right, Ramesh, sorry about that. Please go ahead. And kids, artisan ice cream and treats. Their mission is to serve some of the most delicious flavors from all around. So let them sweeten your day with their homemade lazy flavor ice cream, shakes, Faluda, grapes, or waffles. Even though you can't dine in right now, pickup is available Sunday through Thursdays, noon to 10 p.m. and on Fridays and Saturdays, noon to midnight. To make a to-go order, call Kids Artisan Ice Cream and Treats at 972-673-0285 or visit their location at intersection of Roy Road and Spring Creek in Plano. Kids Artisan Ice Cream and Treats. Flavorful sweet treats. 13 years of catering and experience in the restaurant business, Head Chef Indian Cuisine is the latest I know, Ramesh, but do you realize so Ramesh is saying Ramesh was married for 3 months, and the person he got married to betrayed him and broke his trust, and it's very difficult for him to कि वो उसको माफ करें. But Ramesh, आप ये realize करते हैं कि दो चीजें, एक ये कि आप किसी दूसरे को माफ इसलिए नहीं करते कि they deserve your forgiveness, but you forgive them because you need closure. तो लाइफ में आप उस वक्त तक, right? perpetrator for any occasion, any size at 469-715-5050. For more details, log on to chefplano.com. And Chef Indian Cuisine is located on the southeast corner of Fullerton Legacy at 3948. It is not easy to forget, but until you forget, until you forgive, you will not get closure. आप move on नहीं कर सकेंगे जिंदगी में.
and that will scare you, and unfortunately that energy and that being scared, that's going to impact your next relationship. And even if you get someone who's good and who is genuine, आप उसके motives को question करेंगे. And honestly speaking, if I were you, I feel that's what counseling and therapy and that's what psychologists do. They don't give you solutions to your problems, but they help provide you tools to channel your emotions and to learn and help you forgive. And I feel that's what they are there for. And I, if it were me, I would go through therapy, I would go through counseling, I would use counselors to help me process my emotions, to help me learn how to forgive. Because I want to forgive simply because ताकि मैं अपनी लाइफ को एक क्लीन तरीके से उसमें मूव ऑन कर सकूं, मैं दूसरे लोगों से मिल सकूं, मैं उन लोगों को एक बिल्कुल क्लीन तरीके से उनके साथ डील करूं, उनको उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करूं. So I feel कि forgiveness is not because the other person deserves it, but I want to forgive others ताकि मैं, maybe they're narcissist, maybe they don't have a control. बट उनकी माफ़ी आपके लिए ज़रूरी नहीं होनी चाहिए. आपकी माफ़ी आपके खुद के लिए ज़रूरी होनी चाहिए. एंड 37 सेकंड्स के अंदर हम लोग वापस विल बी ऑन एयर, एंड इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग यू ऑन एयर. बट absolutely. And you as well. Thank you for calling, Ramesh. So, uh, so Ramesh was saying कि वो माफ करना उनके लिए माफी देना बहुत मुश्किल है. But the thing is, you forgive not for them, you forgive for yourself, so you can move on. So with that, we come back. You're listening to Heart, and this is your host, Saima, and let's touch lives together. And with me, I have my co-host. Absolutely, and I think जिंदगी का नाम भी flexibility ही है. जिंदगी में आई थिंक कल्पना स्पेशली मैं फील करती हूँ कि हमने पिछले एक महीने हमने 4 एग्रीमेंट्स को डिस्कस किया. एंड 4 एग्रीमेंट्स में जो they were basically telling you कि how someone else behaves has nothing to do with you. It has to do with themselves. तो मैं आई जस्ट फील सो गुड कल्पना कि मैंने हमने ये 4 एग्रीमेंट्स को डिस्कस किया. बिकॉज ये 4 एग्रीमेंट्स को हम, I don't know कि दूसरों ने क्या लिया, but I myself just feel so good going through that book because it puts me in such an elevated place. My soul is at peace and I feel happy. I forgive everyone. I feel that I'm enough. I feel that I need to just focus on and work on myself and just forgive and move on and just go. And ये भी मैंने लास्ट शो में डिस्कस किया था कि I just feel कि there are certain words जो मैं पिछले 2-3 साल से जिनको फॉलो कर रही हूँ. those words are, I feel they are connected to my core. and उसमें अब मैंने एक नया word भी add कर दिया है, which is flow. And I feel like I'm just flowing. I'm like the river, and जैसे एक दरिया बहता है, and I'm just flowing wherever it takes me. I'm ready to go with that flow, and it's just such an amazing, powerful feeling, Kalpana.
grudges hold करके, right? बिल्कुल। आपका खुद का नुकसान होता है, किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सो रमेश हु हैड कॉल्ड अर्लियर एंड रमेश वाज शेयरिंग विद अस कि उनकी शादी सिर्फ 3 महीने रही थी, एंड उस शादी के अंदर द अदर पर्सन टुक एडवांटेज ऑफ हिम, broke his heart, and you know he was sharing कि it's so difficult for him to forgive that person because of the narcissistic behavior. And मैंने रमेश को यही चीज बोली कि रमेश, you have no control over the other person's behavior, because maybe that person is a narcissist, maybe that person doesn't have any control over their own emotions and their own actions, but the thing is we do, we have a control over our actions, and it's a double edged sword. जब आप के साथ कोई दूसरा ज्यादती करता है और उसके बाद आप उसको फॉरगिव भी नहीं कर पाते हैं, तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। एक तो आपने दूसरी तरफ से हर्ट हुए हैं आप, एंड समवन टुक एडवांटेज ऑफ यू, एंड देन सोने पे सुहागा, आई मीन आइसिंग ऑन द केक, कि आप उसकी आपकी जिंदगी से जाने के बाद भी you are letting that person have so much power over you कि you're sitting there and thinking कि oh my god, उसने मेरे साथ ये कर दिया या वो कर दिया और मेरा दिल तोड़ दिया, and I know it's not easy to do, but you're giving them that control over destroying your life even after they have left your life, right? बिल्कुल। You need to be your first priority, right? You need to be your number one priority, no matter what someone else does to you. What matters is कि आप खुद अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को सबसे पहले, दूसरे को छोड़े, दूसरे को फॉरगिव करना, आपको खुद को फॉरगिव करना होगा। जब तक आप खुद को फॉरगिव नहीं करेंगे, आप दूसरे को फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अस, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद हाउ वी वैल्यू एंड वी ट्रीट आवरसेल्व्स। एंड अगर आप अपने लिए इतनी वैल्यू रखेंगे, तो सबसे पहले खुद को फॉरगिव करें, सबसे पहले खुद को बोलें कि यार, यू नो व्हाट, आई मीन, forgive yourself. Okay, so you chose someone who became a lesson for you, and who came into your life to teach you some really hardcore, some really difficult things, some difficult challenges, right? But they're going to teach you lessons, and uske saath, I feel ke mind, body and soul, all three things in our life, they need to be in sync, and when they are in sync, everything flows. But जब भी इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज ऑफसेट होती है, तो हमारा फ्लो जो है वो हिंडर हो जाता है। तो in order for mind, body and soul to flow, you have to, if needed,
take help. So how do you get help? You get help from counselors, from therapists, from psychologists. You get help from these different people who can help you. They don't provide you with answers. They don't tell you कि ये right है या वो right है, but they provide you tools to help you channel your thoughts and your emotions, and they help you realize that it's okay. Forgive yourself. It's okay. Things go wrong in life. It's okay to get up and to keep going. Bilkul. So with that, let's go to our next song. So here we go. It is from Jab We Met. Here goes. तो पहले तो ये होता था कि हम वी वुड प्ले सॉन्ग्स इन द स्टूडियोज, सो आप लोग भी एंटरटेन हो सकते, यू कुड बी एंटरटेन्ड एट द सेम टाइम, but because Facebook started giving us problem when we were playing those songs, we stopped playing. तो कैसे हैं आप लोग सब, एंड आप लोगों का दिन कैसा चल रहा है? So we have Vinesh, thank you for being here. Munawar, shukriya aapka. Munawar Hussain, thank you for being here. Surjit Singh, Neha, thank you. Nadeem Akram, bahut bahut shukriya for being here. Thank you all for being here. Mahir Javeri, Kulsum Ahmed, Sunita Chaudhary, Shireen Hafiz, Munir Megani. Um, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you all for being us, for joining in and for tuning in. What's your feedback on forgiveness? आपको क्या लगता है क्यों इंसान को इतना मुश्किल होता है forgive करना? What is it that stops us and hinders us? हम क्यों हमारे लिए मुश्किल होती है to forgive? What stops us? क्यों मुश्किल होता है? Is it our ego? Is it our expectations? क्या हमारी expectations दूसरों से हमारे ego से connected है कि यार मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, या मैं इसके लिए इतना करती हूँ, मैं इसके लिए फलाना करती हूँ, तो अगर मैं ये नहीं करूँ तो उससे क्या? Is it our ego? क्या चीज़ है? What is it that hinders, right? So I would love for you to contribute and for you to share your thoughts, your opinions. आप अगर आना चाहते हैं मेरे साथ, अभी हम ब्रेक पे जाने वाले हैं. नहीं, आई थिंक ब्रेक में टाइम है. लेट्स सी. ओके, सो अभी हम 15 मिनट में ब्रेक पे जाएंगे. अगर आप में से कोई भी मुझे ज्वाइन करना चाहता है ऑन स्क्रीन के ऊपर, तो आई कैन ब्रिंग यू इन एंड शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड let you share your thoughts and become a part of my world for a few minutes. Would love for that to happen. So this is only possible on Facebook. I'm streaming live on Facebook on a different gadget, and I'm streaming on YouTube, LinkedIn, and my personal business page on a different device. Um, having said that, I am the queen of multitasking, because मैं अभी बीच में ये सब कुछ जब चल रहा था, तो उसके बीच में मुझे एक मैसेज आया मेरी बेटी से. She was supposed to pick up her younger sister and take her to the doctor. तो मुझे मैसेज आया उसका कि मैम आपने मुझे ऐड नहीं किया हुआ है स्कूल की लिस्ट के ऊपर, तो मैं अपनी बहन को स्कूल से पिक नहीं कर सकती जब तक आप मुझे ऐड नहीं करेंगी. तो वो सब चीज़ों के बीच में मैंने स्कूल को फिर ईमेल किया एंड स्कूल को बोला कि ओके प्लीज़ इसको रिलीज़ कर दें टू माय अदर डॉटर. तो ये डिफरेंट फायर्स, लाइफ भी इसी तरह चल रही होती है. ज़िंदगी में अलग अलग किस्म के इम्तिहान और चैलेंजेस हर वक्त आपको दस्तक दे रहे होते हैं लेफ्ट एंड राइट से, एंड आपको सब चीज़ों के बीच में जगल करना होता है. बट जैसे मैंने थोड़ी सी देर पहले बोला और लास्ट शो के अंदर भी मैंने ये बोला था
कि there are certain words that certain words जिनके साथ मैं resonate करती हूँ, and couple of those words are um, uh, couple of those words are um, abundance, prosperity, transcendence. एंड उन वर्ड्स के अंदर मैंने एक और वर्ड को भी ऐड किया है. सो इन एडिशन टू abundance, prosperity, transcendence, I have added the word of flow. And flow has become for me such a powerful word, because मैं जब उस word को imagine करती हूँ, I feel, I just visualize कि आई एम लाइक अ रिवर, और मैं एक दरिया की तरह हूँ, और वो दरिया जिधर मुझे लेके जा रहा है, मैं उस दरिया के साथ फ्लो कर रही हूँ. तो दैट हैज बिकम सच अ पावरफुल वर्ड फॉर मी. एंड यू नो एंड मैं आपको उसकी फीलिंग नहीं पता, फीलिंग, उस फीलिंग का इजहार करना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स सच अ पीसफुल वर्ड जो हिट्स माई सोल, और वो मेरी रूह को टच करता है, और आई जस्ट फील आई एम फ्लोइंग. तो जब आप बहुत सारी अपने बैगेज को शेड कर देते हैं, एंड यू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर weighing you down, your life changes. So um, सो या आप बताएं, कोई वर्ड्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में. हे उस्मा, हाउ आर यू डूइंग, थैंक यू फॉर वाचिंग. आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे वर्ड्स हैं? मेरे लिए ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं. तो इस वक्त 4 वर्ड्स: abundance, prosperity, transcendence and flow, ये इस वक्त मेरी ज़िंदगी का कोर हैं. और मैं I'm flowing with these words, and these words are changing my life. And on that note, I am a real estate agent based in the Dallas area. I do residential and commercial real estate. I'm your one-stop shop, your $1 million agent. So do reach out for all your real estate needs, चाहे वो residential हो, चाहे commercial हो. So do reach out. I would love to help you. I believe in touching lives. That's what my show is all about. My show is about touching lives. I hope I touch lives in my women empowerment group, which is called Women of Noor. For women who are watching, I would love for you to join the group. And I feel that's what I do in everything. I love real estate. I've been doing it for 17 years. 17 साल हो गए हैं मुझे करते हुए. क्या जर्नी रही है, but then that's life, right? So with that, I'm going to bring Kalpana back on, and we're going to go back into the show. And so here goes. So that was Jab We Met Se song, and हम लोग रेडियो शो के ऊपर in Heart to Heart with Saima and Kalpana, we are talking about forgiveness, and you know what? We are not perfect, so forgive others as you would want to be forgiven as well. So Kalpana, welcome back. कैसी हैं आप? बिल्कुल.
एंड आई थिंक कल्पना जिंदगी का मकसद भी यही है. जिंदगी wants us to evolve continuously, evolve with time. Change is change is necessary, and we are supposed to grow. Because जब पानी एक ही जगह पे उसका ठहराव रहता है, और जब वो पानी उस जगह से हिलता नहीं है, तो उसके अंदर गंद जमा होना शुरू हो जाता है, वो कीचड़ जमा होनी शुरू हो जाती है, राइट. बट वो पानी जो फ्लो करता है, जो दरिया की तरह बहता रहता है, उसकी प्योरिटीज निकलती जाती हैं, और उसके अंदर जो भी चीज आके गिरती है, आप नो मैटर कुछ गिरे, कुछ कोई चीज बाहर उसमें से निकाली जाए, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, बट यू नो व्हाट, यू कीप फ्लोइंग. So here's the thing, right? कि you are supposed to control your mind. Your mind is not supposed to control you. So जब आपका mind आपको control करना शुरू कर देता है, and your mind is overthinking, and your mind is telling you, ये उसने क्या कर दिया, ये उसने ऐसा क्यों किया, वो उसने वैसा क्यों किया, मुझे ऐसा रिएक्ट करना चाहिए, मैं क्यों किसी की बात सुनूं. जब आप माइंड की सुनने लगते हैं, तो माइंड आपको प्रॉब्लम्स में ही डालता है. बिकॉज देन यू आर नो लॉन्गर फ्लोइंग. वो सब ओवर थिंकिंग हो रही है कि उसकी कैसे जरूरत, उसने मेरे से ये बात की, या बट आप ये, दिस इज वेयर दैट 4 agreements कम थ्रू, जो हम पिछले 4 हफ्ते से डिस्कस कर रहे थे, राइट. कि what other people do, no matter how they have treated you, but it has nothing to do with you. उनकी जो behavior has completely, it's because of their own thought process, because of their own upbringing, because of their own circumstances. It has nothing to do with you. But on the same token, I mean, we also know कि हम जो हमारे मुंह से निकलता है, हम जो बात करते हैं, हमारी बात में, हमारी हर एक्शन में, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम अगर किसी को देखते हैं और कोई एकदम से हमारे सामने आता है और हम उससे बोलते हैं, यार ये तुमने क्या पहना हुआ है, अरे तुमने तो वेट गेन कर लिया है, अरे तुम्हारा तो अब तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लग रहे. I mean, we are responsible for our words. We are responsible for everything that comes out of our mouth. So हम किसी दूसरे के दिमाग के अंदर अब हमने उस चीज का की जड़ डाल दी है, राइट. वी हैव पुट अ सीड उनके अंदर. अब वो सीड किस तरह से जर्मिनेट करेगा, वेयर दे आर गोइंग टू थिंक कि ओ यू नो व्हाट, टुडे आई एम नॉट लुकिंग गुड, ओ गॉश मैंने वेट गेन कर लिया है, ओ यू नो मेरे बाल आज अच्छे नहीं लग रहे हैं. और फिर आप हर दफा जब भी आप उस इंसान को मिलेंगे, आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे होंगे कि ओके, ये इंसान सोच रहा है कि मेरे अंदर ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, मेरे अंदर ये सब चीजों की कमी है, राइट. एंड दैट इज रॉन्ग.
वो चाहे जो भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, इन लॉज हो, आपके दोस्त हो, वो कोई भी हो, राइट? द इंटेग्रिटी ऑफ योर वर्ड, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू से टू अदर्स. अगर आपके पास वो अल्फाज नहीं हैं जिनसे आप दैट यू कैन यूज टू बिल्ड अदर पीपल अप, then you know what, आप किसी के लिए अच्छाई नहीं कर सकते हो. If you can't do good for others, then कम से कम से दूसरों के लिए बुरा भी नहीं करो. I mean, it's okay for us to be who we are. It's okay, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई कोई काला है, कोई गोरा है, जो भी है. We are all made the way our creator wanted us to be. We are supposed to live our authentic lives. हम जिस तरह से इस दुनिया में आए हैं, जो हमारी characteristics हैं, जो हमारे अंदर है, there is an authentic version of ourselves within us, and we are supposed to live up to those standards. और जब हम दूसरों की expectations के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं, and when we are living according to what others want from us, then we are living a very unauthentic life, and we are living a life which is very far away from who we are meant to be. And then that fills us with unhappiness, and that fills us with anxiety, and that makes us turn into this person that sometimes we stop even recognizing. All right, so अब हम break के ऊपर हैं, and we are hey Dimple, thank you for joining us. Thank you for being watching us, being a part of our live show. We are streaming. This is Saima, and we are streaming from the radio station, from the studio, 104.1 FM. आप रेडियो पे भी हमें Dallas में सुन सकते हैं. No matter where you are in the world, of course, you can watch us because we do live stream the show. Uske alawa, you can go to radiocaravan.com and you are able to watch us from there as well. तो हमारा मकसद ये है to touch lives wherever we go. That's my mantra. मेरी जिंदगी का मंत्रा यही है कि जैसे जैसे मैं अपने आप को एक बेहतर all my focus is कि जो मैं कल थी, today I want to be slightly better than what I was yesterday. So ये मेरी journey है. And आपकी journey में आपका क्या focus है? I would love for you to share. We are talking about and focusing on forgiveness today. Forgiveness क्यों ज़रूरी है? क्यों हमें इतना, why is it so difficult? Give us feedback. Why is it so difficult to forgive? हमारी ego है, हमारी expectations हैं. What hinders us? What stops us? Because जिंदगी में आप सिर्फ उस point तक आप एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं जब आप दूसरों से कोई उम्मीद ना लगाएं, जब आप किसी दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें. अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो आप खुद करें दूसरों के लिए विदाउट एक्सपेक्टेशन. लाइफ में जब जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, दैट्स योर डाउनफॉल राइट देयर. वो चीज, दैट थिंग विल टेक यू डाउन and make you hit rock bottom whenever you expect something from someone. If someone would like to come and join me and share your thoughts on the show, आप हम हर Thursday को 1 से 3 बजे 1 2 3 we are here streaming live from the studio in Dallas. And join us anytime you want. Send me a message, a request, and join me and share your thoughts and your opinions. कि क्यों इतना difficult है? Why is it difficult to forgive? Why do we hold on to grudges? Yes, people, there are all kinds of people in this world. There's no shortage of narcissistic people. And we'll talk about narcissism in another show. But narcissism has to do with people जो सिर्फ अपना they're self-righteous. All they think about is themselves. उनको लगता है कि वो हर चीज में right हैं. उनको लगता है कि हर किसी को उनकी बात सुननी चाहिए. So narcissists are people who only want
you to listen to them because they are right. um, and you know, दुनिया में नार्सिसिस्टिक लोगों की कमी नहीं है। तो हम अपने आप को उन लोगों से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हर वक्त कहते हैं मेरी बात सुनो, मैं राइट हूँ। यू कांट। सो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, यू नो। और अगर टॉक्सिक पीपल आर देयर, वो आपके घर में हैं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और अगर आप उन टॉक्सिक लोगों से अपने आप को यू नो, जिंदगी, ये जिंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, एंड लिव योर बेस्ट लाइफ। बट बेस्ट लाइफ को लिव करने के लिए यू हैव टू समटाइम्स ब्रेक टाइज फ्रॉम नार्सिसिस्टिक पीपल, फ्रॉम पीपल हु आर टॉक्सिक पीपल, जो लोग आपके सिर्फ आपके इर्द गिर्द, अब जब उनके पास जाओगे आप अंदर से फील करोगे कि आपकी खुद की जो एनर्जी है, आपकी खुद की एनर्जी जो है, आप अंदर से बहुत बुरा फील करने लगते हो जब आप उनकी प्रेजेंस के अंदर होते हो, बिकॉज दे जस्ट, their energy is messed up and they filled you up with just negativity. So people who are not authentic, people who are fake, people who uh, who just बकवास करते हैं, कुछ उनकी बात में बस जो बोलते हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद पीपल जिनके जिनकी बात में कोई वेट नहीं है, you know. Stay away from people who are toxic because they just mess up your energy. um, so I think we are back. All right, so this is Saima Dillon, and with me I have my co-host Kalpana. And how is everyone doing today? You're listening to Heart with Saima and Kalpana. And हम हर Thursday को आपके पास आते हैं from 1 to 3, and we hope to touch lives. Hey Kalpana. बिल्कुल, बिकॉज जिंदगी बैलेंस के बगैर तो चल ही नहीं सकती ना। तो balance is absolutely important in life. And if you are surrounded by people who are toxic, जो आपके लिए आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप जब उनकी एनर्जी के अंदर होते हैं, they mess you up, you know what, there's something wrong there. So with that, let's go into our next song, and this is Dance Chance, and hopefully you will enjoy this one. Here goes. Okay, so I have to make an emergency call. I'll be right back.
All right, so that was Dance Pe Chance from Rab Ne Bana Di Jodi, and hope you enjoyed that song. Oh, that's cool. तो कल्पना आपको घर पे बैठ के कैसा फील हो रहा है शो करना? आई नो कल्पना, म्यूजिक जब बजता है ना तो मैं भी बैठ मेरे लिए भी बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज you know I think music is something that does feed the soul, and so with that, Radio Caravan is bringing for you a new segment with Usha Ji. She's known to help people on many aspects of their life with her psychic excellence, matters to do with relationship issue, career direction, business ventures, money matters. So if you're interested, you can ask your question live on air every Wednesday between 12 and 12:30, or you can log on to ushag.org for more info about her. So with that, we have been talking about forgiveness, and it's especially because it's the month of Ramadan, and के महीने में थोड़ा सा focus ज़्यादा होता है on kindness, on forgiveness, on um, reach out to people that you haven't spoken to in a while, do things that you haven't done in a while. Kindness, though, I think it's something जो कि हमारी personality का हिस्सा होना चाहिए, because it's as simple as just smiling at someone. And I think you know इतनी छोटी चीज़ों के अंदर आप काइंडनेस लेके आ सकते हैं. And studio ka number is 214-817-3333. And you're listening to Heart, and हम हर Thursday को आपके लिए आते हैं. अगर आप हमारे previous shows भी सुनना चाहते हैं, तो you are able to go on YouTube and search for Saima Dylan and Heart, and you are able to listen to a lot of my podcasts right there. Kalpana, although I mean, by profession I'm a realtor, um, but I just feel that when you start touching lives by what you do, right there's just something so amazing about it, something so sublime. कि ये जो जर्नी के अंदर जब आप दूसरों के लिए कुछ करने लगते हैं, तो उससे आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है. um, what you put out into the universe, it just completely changes everything. It makes such a big difference. जिंदगी में कोई भी चीज आपको अगर करनी है ना, तो उसके लिए वो इनिशियल इनिशिएटिव जो है, दैट इज एसेंशियल. बिकॉज जब तक आप उस चीज की नियत नहीं करेंगे, दैट इंटेंशन
कि इंटेंशन, ओके मैं अगर मेडिटेशन करना चाहती हूँ तो वो मुझे इंटेंशन की ज़रूरत है कि ओके आई दिस इज़ व्हाट आई एम वांटिंग टू डू। जब आप किसी चीज़ की नियत करते हैं, इंटेंशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली द ये पॉलो किलो का कोटेशन है, एंड वी आर गोइंग टू bring ये वाली जो book है जिसके अंदर ये quotation है, which is called The Alchemist, and we're going to talk about it soon on the show. But when you want something bad enough, the universe conspires to make it happen for you. So that right there, it जब आप नियत करते हैं किसी चीज़ की, अपने ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ की चेंज लाने की, तो जो दुनिया है, यूनिवर्स है, एनर्जीज अलाइनमेंट शुरू हो जाती है, एनर्जी स्टार्ट चेंजिंग, एंड एनर्जीज व्हेन दे स्टार्ट चेंजिंग, योर लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग. Here it goes. This is Kamli from Dhoom. All right, so hope you're enjoying the show. कोई questions हैं, कोई thoughts हैं, we would love for you to share your thoughts and feedback with us. Um, जिंदगी में बहुत ज़रूरी है to make sure आपको अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए, you know, you have to do. Yes, Malika, आप अगर शो पे आना चाहती हो तो send me a request. I'll bring you in. Rahila, thank you for watching. Wakar, thank you for being here. Zahid, बहुत बहुत शुक्रिया. Zareen Fatma, thank you for being here. Dimple Matani, Zankhana Shah, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. Thank you for coming in, and thank you for being a part of the show. So Malika, yes, अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हो something positive, and so send me a request and I'll bring you on. um, I'll bring you on, especially break it request. uh, अभी 10 मिनट में ब्रेक पे जाएंगे, तो at 2:30 मलिका. सो 2:30 के ऊपर ये नीचे देखो डिफरेंट बटन्स हैं, उसमें से एक बटन है जिसके अंदर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकती हो कि यू वांट टू कम ऑन एंड आई कैन अप्रूव इट. यस, यस, एट 2:30 ब्रेक के अंदर जाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे 10 मिनट पे, फिर आई विल ब्रिंग यू ऑन हियर. सो सो या आई मीन जिंदगी में हमारे हर इंटेंशन. You want to come join me on the screen, right, Malika? Oh, रेडियो पे कॉल करना चाहती हो? It's 214-817-3333. अगर रेडियो पे कॉल करना चाहती हो तो you can do that too. अगर यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर, this screen right here, अगर इसके ऊपर आना चाह रही हो तो you can send me a request. I'll bring you on here. It's 214-817-3333. Studio ka number. You can call that number and I can bring you on air. 214-817-3333. रेडियो पे आने के लिए. So अगर रेडियो पे कॉल करना चाह रही हो तो you can actually call right now. अगर अभी कॉल करना चाह रही हो, क्योंकि ब्रेक पे फिर I won't be able to take you in the studio. Yes, that's the number. So welcome back. I have a caller, Kalpana. I'm going to put you on hold and bring the caller in. So hold on.
All right, Malika, you're on air. How can I? What would you like to share? Well, thank you so much for your call, Malika. We appreciate it, and you have a wonderful day. So, all right. So, Kalpana, you're back on air with me, and we had a really nice caller who called, and she just wanted to give best wishes to everyone. So yeah, we will be going on a break in 7 minutes, but until that happens, um, we do want to share a message, and the message is that if you are dreaming to visit Dubai, welcome on board Emirates Airline with flights from DFW to Dubai and beyond. With advanced HEPA air filters, you can be sure we will put your health and safety first when you fly with Emirates. Call Lost and Travel at 214-631-2458 for complete schedule to book your flight today. So, and studio का number is 214-817-3333. अगर कोई भी call करके, and if anyone wants to share, we've been talking about forgiveness, and we've been talking why it is so hard to forgive. तो आपका क्या ख्याल है? क्यों forgiveness इतनी मुश्किल होती है?
And I think every individual needs to do that, right? I mean, हम कोई भी perfect नहीं है. We are just imperfect people. And I think we all need to constantly work on self improvement. खुद को बेहतर करने के ऊपर work करना चाहिए, बजाय इसके कि अगर आप अपने आप को, if you find yourself always just being critical of other people, there's something wrong with you. um, Kalpana, I have my podcast जो मैं करती हूँ, which people can listen to on YouTube or LinkedIn, Facebook पे भी streaming करते हैं. And मेरे podcast के ऊपर, I have a psychiatrist who comes in every first Tuesday of every month. And Ashok always says कि Ashok has been married for 35 years, and Ashok runs what is he calls an empathy clinic. And Ashok says कि he has to work on his marriage every single day to make sure कि marriage जो है, it's it's beautiful. He's putting effort into it. He's connecting. So relationships के अंदर it requires work. Just because you are married to someone, just because you have given birth to your children, it doesn't mean that it's just going to happen. It means that you have to work on every single relationship every time, because relationships को nurturing की ज़रूरत होती है, and it requires a lot of effort. So with that, we do have 15 seconds. We are about to go in a break. Kalpana, I'll let you continue with your thought when we come back. So listeners, you are listening to Heart with Saima and Kalpana, and here we go on a break. So So yeah, we have 30 minutes before the show ends. Would anyone like to share anything? Well, if you would like to come on air, you can call 214-817-3333, and we come to you every Thursday from 1 to 3. We stream live from Dallas. This is Radio Caravan, the studio, and तो जो भी हो रहा होता है, मल्टीटास्किंग हो रही होती है स्टूडियो में हर वक्त. We are streaming on YouTube and LinkedIn and Facebook, and we हमारा मकसद वही है कि to just touch lives wherever we can.
तो कैसे हैं आप लोग सब? हाउ इज एवरीवन डूइंग? आज थर्सडे है, डैलस के अंदर वेदर इज रियली ब्यूटीफुल वेदर एंड यू नो मैं हर वक्त आजकल ये चीज़ बार बार बोल रही होती हूँ कि ज़िंदगी में जितना आपको खुश रहना है, उस खुशी के लिए um, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ चीज़ों का लेयर अपॉन लेयर, एक जिसको बैगेज बोलते हैं, तो हमारे ऊपर इमोशंस का मेंटल ये इमोशंस का एक बैगेज है जो हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर एक, यू कैन नॉट सी इट बट इट्स देयर, वो एक बैगेज है। तो जिंदगी में अगर आपको खुशी चाहिए, तो उस खुशी के लिए आपको उस बैगेज को, you have to shed the baggage, because until you shed your baggage, you will not be able to flow. So in order for your soul to be at peace, in order for your soul to feel fulfilled, you have to shed so much of the baggage जो सदियों से हम अपने ऊपर जमा करते आ रहे हैं. We are carrying, just like hoarders, we are carrying so much baggage. So in order to find true joy, true happiness, we have to let go and we have to shed that baggage, and we have to become like a river that just flows through you. And there's a beautiful song, Google कीजिएगा YouTube के ऊपर, it's called the river flows through you, and it's a beautiful piano piece. अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो thank you for being here, Nargis. Raja, बहुत बहुत शुक्रिया. राकेश, Namra, कैसी हैं आप? Thank you for watching and being here. So, जिंदगी के अंदर जब आप, when you become like a river and you start flowing, तो the energy will start flowing. और जितनी रुकावटें आती हैं, जो आपकी एनर्जी जो हमारे अंदर से फ्लो कर रही होती है, जो वो रुकावटें आती हैं, and they impair our energy from flowing, um, that right there makes a huge difference. So my energy is flowing because I have turned myself into a river that just flows. So right now the river flows through me. आप लोग कभी भी अगर मुझे ज्वाइन करना चाहें, वी डू स्ट्रीम लाइव. आप लोग कभी भी मुझे ज्वाइन करना चाहें, आई कैन ब्रिंग यू राइट हियर ऑन फेसबुक एंड join me. तो you know um, I would love to do that. So 20 seconds, 20 seconds maybe we are going to be back on air. And so here we go, back to the show. We have 25 minutes to go. हम हर Thursday को आते हैं आपके लिए. So hey Kalpana, do you want to take over?
And I think on that note, it's also important to say, because I'm such a big advocate of therapists and counselors and psychologists, and I feel it's absolutely it's absolutely important to to mind, body, soul, राइट. ये तीन चीजें हैं, माइंड, बॉडी, सोल. जब तक ये तीनों चीजें इन सिंक नहीं होती हैं, तो हम किसी ना किसी लेवल के ऊपर सफर ही कर रहे होते हैं. सो सो इन ऑर्डर फॉर अस टू, अगर हमारी बॉडी में कोई एलिमेंट होती है, या हम फिजिकली डाउन होते हैं, या हमें बुखार है, या कोई बीमारी हो जाती है, तो जिस तरह हम डॉक्टर को सीख करते हैं, उसी तरह मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेंटल हेल्थ के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, being bipolar, being having borderline personality disorders. There are so many things which come into play, and these are things for which you do, which, because हमारी हमारी आंखों को ये चीजें नजर नहीं आती हैं, हमें सिर्फ सामने वाले की बिहेवियर नजर आती है, एंड हम ये बोल रहे होते हैं, यार वो बदतमीजी कर रहे हैं, या वो हमारे बच्चे शोर हंगामा कर रहे हैं, या हमारे बच्चे हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं. But it's a reflection that there's something wrong with those kids, and when they are misbehaving, when they're screaming, when they're shouting, they're actually asking for help. So they need a therapist, they need a counselor, they need a psychiatrist, they need a psychologist. So जिस तरह फिजिकल चीज विजिबल है, मेंटल विजिबल नहीं होती है, बट इन माइंड, बॉडी, सोल, इन सब चीजों को इन सिंक होना बहुत ज़रूरी है. सो यू कैन फाइंड ट्रू निर्वाणा, ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू जॉय इन लाइफ. और बट जब आप काउंसलर्स के पास भी जाते हैं, तो समटाइम्स यू हैव टू स्विच थ्रू मल्टीपल काउंसलर्स to be able to find the right counselor that resonates with you, that resonates with your child. jo aap, because sometimes if these people are not empathetic enough, if these people are not knowledgeable enough, are not don't have enough experience, then they can actually, जिस तरह कल्पना अभी आप बात कर रही थी, they can actually hinder the growth and the recovery of the patient, because they are not empathetic enough. तो वो बहुत ज़रूरी है, to find the right person that you can click with. जो भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाती है ना, वो चाहे खाना है, वो चाहे इमोशंस हैं, वो चाहे फीलिंग्स हैं, जो चीज़ अंदर जाती है, इट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड. जो भी चीज़ प्रोसेस सही तरह से नहीं हो पाती है, इट मीन्स कि वो आपके अंदर टॉक्सिक हो जाएगी. वो खाना जो आपको डाइजेस्ट नहीं करता है, मगर आप फिर भी उसको खाते जाते हैं, देन इट मीन्स कि वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो रही है एज टॉक्सिन्स. जो इमोशंस आपके अंदर जाते हैं थ्रू स्ट्रेस, अगर आप उन इमोशंस को प्रोसेस नहीं करेंगे, तो देन दे बिकम टॉक्सिन्स इन योर बॉडी. सो एनीथिंग दैट गोज इन नीड्स टू फाइंड एन आउटलेट आउट, एंड इफ इट डजंट, then it's a problem. And with that, let's go on to the next song, and hope everyone enjoys this. Ye mera dil pyar ka deewana. Alright, तो हम अपने आखिरी 20 minutes में हैं, 19 minutes में, and we've just been discussing कि जो mind, body, soul, ये different aspects
with Raj. Thank you for watching. Nargis, thank you for watching. Thank you guys for joining me here. This is Radio Heart to Heart, and हम लोग इस वक्त live stream कर रहे हैं from the radio station. And we're talking about forgiveness and how necessary forgiveness is, because forgiveness भी वो एक emotion है जो अगर वो इमोशन, अगर हम उस इमोशन को प्रोसेस नहीं करते हैं और वो इमोशन हमारे अंदर रह जाता है एंड वी डोंट फॉरगिव पीपल, इट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉब्लम. इट मीन्स कि जब हम माफ़ नहीं कर पाते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे अंदर एक टॉक्सिन्स बन के एक टॉक्सिन्स हमारे अंदर एक स्पेस ले लेते हैं. And toxins then turn into autoimmune diseases like cancer and arthritis, and बहुत सारी ये चीज़ें हैं जब हमारे अंदर स्ट्रेस हम इनटेक कर रहे होते हैं, या दूसरों की बातें जो हम जिनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे होते हैं. ये सब चीज़ें जो हैं हमारे अंदर जब बस जाती हैं, हमारे अंदर घर बना लेती हैं. So then that's a problem, because then they turn into diseases of different kinds. And तो जो फिजिकल, जिस तरह फिजिकल बीमारी होती है और फिजिकल बीमारी जो है वो नज़र आती है, तो हम राइट अवे डॉक्टर के पास चले जाते हैं और दवाइयाँ ले लेते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट. बट जो मेंटल और इमोशनल चीज़ें हैं, हे अली, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. ज़फ़रुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ज्वाइन कर रहे हैं. तो ये जो चीज़ें हैं इमोशनल, मेंटल, जब ये चीज़ों को हमारे अंदर जाती हैं, हम हर्ट होते हैं, हम अपसेट होते हैं, हम किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे होते हैं, किसी ने हम कुछ बोल दिया और हम इन चीज़ों को हमारे अंदर से एग्जिट आउट नहीं करते हैं, तो ये हमारे अंदर टॉक्सिन्स बन के बैठ जाती हैं. और जब ये टॉक्सिन्स वो फिजिकल हो, वो मेंटल हो, इमोशनल हो, जब आउटलेट इनको नहीं मिलता है, तो it becomes a problem. ये emotions हमारे अंदर, जब negative emotions जब जगह हमारे अंदर बस जाते हैं और जगह बना लेते हैं, and we don't process these, there's a problem. It means they're going to manifest themselves in some negative form or the other. And unfortunately, that's where autoimmune diseases come in. And there are so many different autoimmune diseases जो कि हम realize नहीं करते. But these are things that, we need to be aware of. Seek psychiatrists, seek counselors, seek help जो professionals हैं, and they are experts in their field, and they can help you channel these emotions. And sometimes, yes, you have to go through multiple people to find the right person who resonates with you, right person who has the right amount of empathy to be empathetic with you. वो आपको feel कर सकें, आपकी journey को समझ सकें. They can give you a kind word, and they can help you channel everything that you have experienced in your life, because at the end of the day, so we are back, and this is right here Saima, and with me I have Kalpana. Hey Kalpana, welcome back. Because you जब आप दूसरे को इतनी अहमियत देते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करके चले जाएं, तो इट्स उससे ज़्यादा बेहतर है कि create space, enough love for yourself. Because अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना किसी दूसरे को माफ़ करने में, तो it means कि first you have to forgive yourself too.
तो आई मीन जब आपको अगर आप सो आई थिंक दिस इज समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कल्पना आपको याद है कि हमने जब लास्ट शो किया था लास्ट वीक तो हमने जब एंड किया था शो तो हमने एंड किया था इस बात के ऊपर कि बिलीव दैट समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ एंड कल्पना आई वांट टू शेयर that and I would love for callers जिन्होंने ये believe किया and something good happened in this week for them to call us and to share that at 214-817-3333 because Kalpana something amazing happened with me in my life so ये show Thursday को हुआ and Thursday ko so you know I'm a real estate agent by profession and I have been one for 17 years and I had this land commercial piece of land for sale in Frisco on Preston Road. And Kalpana, mujhe next morning I got an offer on my land, and within few hours, I mean I've had this. I've मेरे इन्वेस्टर्स ने ही ये लैंड खरीदा था कमर्शियल का few years back and I got this full price offer on it and then Kalpana जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट अपने क्लाइंट्स को सेलर्स को भेजा टू साइन उसी दौरान मुझे टेक्स्ट मैसेज आया कि hey we are interested in this property and they called me and I told them I've just sent अभी साइन नहीं हुआ है बट मैंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा है मेरे क्लाइंट्स को टू रिव्यू उसी इट्स सो अमेजिंग कल्पना बट उसी टाइम के ऊपर उन्होंने मेरे से बोला वी आर सेंडिंग यू अ फुल प्राइस कैश ऑफर दूसरे वाले के अंदर मुझे 2 महीने लगते उसको क्योंकि कमर्शियल था कमर्शियल के रूल्स डिफरेंट होते हैं और मुझे थोड़ी सी देर इन्होंने कहा वी विल डू अ क्लोजिंग इन 7 days फुल कैश ऑफर एंड एंड वो एक उस प्रोसेस में मैंने जब मेरे ये ऑफर्स के अंदर उनको मैसेज किया कि वी आर इन अ मल्टीपल ऑफर सिचुएशन तो फर्स्ट वाले जो हैं उन्होंने extra a whole lot of more money की cash offer 7 day close की भेज दी and we literally just this was last Thursday right and I just closed on that this afternoon उसकी closing हुई है तो एक हफ्ते के अंदर तो something amazing happened for me and I'm so happy so I think this should be like a weekly ritual okay before show ends we leave our listeners who are listening to us on Facebook and YouTube and LinkedIn and everywhere, as well as the callers जो हमें live इस वक्त on Radio Caravan सुन रहे हैं कि we end every single show on this belief that something amazing is going to happen in our life and but the responsibility is कि उसके बाद या तो आप मुझे मैसेज करें या आप हमें ऑन एयर कॉल करें या आप हमें कॉल करके शेयर करें कि what amazing thing happened with you in this last week and then together we create this really cool synergy जिसके अंदर सारे लोग मिलके और believe करें कि something amazing is going to happen and the power of synergy and the power of belief and the power of having faith कि something great will happen and it actually happens. Wow. Awesome. Awesome. Wonderful. And it's also the power of synergy, it's the power of different people आप सोचें कि इस वक्त अगर 1,000 लोग अगर हमें सुन रहे हैं और अगर वो 1,000 लोग सारे इस चीज को बिलीव करना शुरू कर दें कि there is something amazing which is going to happen in our life तो
you know, then the how all those energies from different places, from different part of the world, will just combine and create this synergical effect and impact, and and just make things happen because of the power of belief and hope and faith. And so I think we should do it every time. आपने अपने आप को आजाद कर दिया, राइट? Yeah. And And you know what? इसी ये जो आप बात बोल रही हैं, इसी बात के ऊपर there's something really amazing said by Martin Luther King Jr. And he said that forgiveness does not mean ignoring what has been done or putting a false label on an evil act. It means rather that the evil act no longer remains as a barrier to the relationship. Forgiveness is a catalyst, creating the atmosphere necessary for a fresh start and a new beginning. And I think isi note ke upar we are going to go into this last song before we end the show. And here we go. And studio का नंबर is 214-817-3333. अगर आपके साथ लास्ट वीक कुछ अमेजिंग हुआ जैसे मेरे साथ अमेजिंग हुआ मेरी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर, तो do come and share with us, and please make a note and believe in the power that something great will happen to you again, and come on air next week and share with us. So here goes. Bazigar, oh Bazigar. All right. So I hope you guys heard what I shared. कि last week अगर आप मेरे साथ थे इस शो पे, तो हमने शो को एंड किया था इस बिलीफ सिस्टम के अंदर कि something amazing will happen to all of us, and something amazing happened to me, and I'm on cloud nine, and I'm just so happy, that I last Thursday, I put this commercial piece of property under contract last Thursday, और एक हफ्ते के अंदर cash close एक हफ्ते में, no contingency, hard earnest money, and I closed on it just a few hours ago. So मेरे लिए something amazing, wonderful happened, and you know. I hope something amazing happens for everyone who's listening, everyone who's watching. We're getting ready to end the show in 3 minutes' time. So, believe with me that आपकी life के अंदर कुछ amazing होगा. Ali, thank you for listening to the show from Pakistan. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Nasreen, how are you doing? Long time. Israr, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for watching. So, Ali is saying sometimes things are not amazing, but the way you look at those things make them. And zindagi to hai perspective. Life is all about perspective. You know, बड़ी बड़ी चीज़ें की तरफ मैं फोकस नहीं करती, बट यस ये जो मेरे रियल एस्टेट की डील हुई है ये मेरे लिए बहुत बिग, it's something huge for me for different reasons which we don't have time to go into. But hey Naz, thank you for joining. But जिंदगी में जब आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी का पर्सपेक्टिव, आपका जिंदगी का नज़रिया बदल जाता है. और जब आप
लोगों के आगे से पत्थर कांटे चीज़ें ऑब्स्टिकल्स हटाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी नफ़रतें, अपनी जेलसी, अपनी एनवी, अपनी चीज़ों को you put them out into the universe, और वो दूसरों के लिए जाके रुकावटें बने. When you put goodness out into the universe, it ricochets back to you. So whatever you put out there, it will, that energy will come back to you, and it will be reciprocated. So put goodness out so you can receive goodness. So we're going to get ready to end the show in just a couple of minutes. Thank you all for being here. I do come here, I live stream my show on different platforms. So you know uh, egos destroy relationship. If someone said something so amazing to me, and I'm actually going to say that live on air. So hold on. So, with that, we are approaching the last minute and a half of our show. And one thing, Kalpana, that I want to leave everyone with, actually, two things. One is the power of belief system, that something amazing is going to happen in all our lives, in everyone who's watching, in all our lives. And do come with us and share with us next week and tell us what amazing thing happened in your life. And last week I spoke to someone, his name is Bharat Patel, and Bharat shared something amazing with me. And he said कि अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर कोई चीज अट्रैक्ट कर रही हो, and you're constantly attracting something that you don't want to attract, then you know what, you will have to change something within yourself in order for you to change what you are attracting. And Kalpana, that right there was so powerful, and I'm going to take that thought with me for the rest of my life. And I swear to you, Kalpana, कि जैसे ही उन्होंने मुझे ये बोला, तो मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू कर दिया. And this is us signing off. This is Saima, and I have Kalpana. All right. Well, आप लोगों का भी okay. Let me first hang up with Kalpana. Hey Kalpana. Hey Kalpana. Hey Kalpana. Can you hear me? Okay. So आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. Believe that something amazing will happen in your life, just like it happened in mine. And inshallah, au revoir. Inshallah, we will meet again next week. So do share with us कि आपकी life में what amazing thing happens, just like I shared what amazing thing happened in my life. So बहुत बहुत शुक्रिया. Ali, thank you for joining. Thank you all for being here, for being a part of my amazing world. Take care. All right. Thank you all for watching. Thank you for being here, and have an awesome week. Hi. Hi, how are you? Good. How are you?